तो क्रेडिट पॉलिसी की जो कवरेज है उसमें हमारे रिपोर्टर भी शामिल है, इसलिए सीधा अंकुर को भी आप देख रहे होंगे आरबीआई के ऑफिस से बाहर ही खड़े हुए हैं। उनसे भी हम थोड़ा पड़ताल करेंगे कि ठीक पॉलिसी से पहले क्या हो रहा है। और कुछ मेहमान भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, मैं आपको परिचय भी कर देता हूँ। सुनील सुब्रमण्यम जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, पहले सुंदरम म्यूचुअल फंड्स में हुआ करते थे, हमारे वेटरन साथी हैं और इनसे काफ़ी कुछ हमने सीखा है, समझा है। आज भी उनकी इंटेलिजेंस का फ़ायदा लेंगे। दूसरे मेहमान जो आपको दिख रहे होंगे वो है दीपक अग्रवाल, CIO हैं डेट डिवीज़न के कोटक AMC से। दीपक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए आज समय निकाला। आपकी ज़रूरत हमको आज बहुत पड़ेगी क्योंकि आज जो मिस्टर गवर्नर बात रखने जा रहे हैं उसकी कैलकुलेशंस थोड़ा हम आपसे समझेंगे। और तीसरे हैं अर्श मोगरे जो कि प्रभुदास लीलाधर से हैं। अर्श आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने भी हमारे लिए समय निकाला। आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगेगा, थोड़ा मार्केट कैलकुलेशंस आपसे हम ज़रूर करवाएंगे। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले अंकुर के पास ही चलते हैं। अंकुर जरा बताइए, हवा में नमी कितनी है, यानी कि CRR कट होने के चांसेस कितने हैं? यहाँ कुछ ही देर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल करेंगे और वाइड एक्सपेक्टेशन यही है कि रेपो रेट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का जरूर मानना है कि CRR रेट कट इस बार RBI कर सकता है क्योंकि लिक्विडिटी जो है उसकी फोरकास्ट ये की जा रही है कि आगे जाकर वो करीब डेफिसिट में हो सकती है 2 लाख करोड़ के आसपास। तो उसके जरिए उस वजह से रिजर्व बैंक शायद रिजर्व जो CRR है उसमें कुछ बदलाव कर सकता है, लेकिन रेपो रेट में बदलाव की फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है। पिछले कुछ दिनों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बयान भी दिया था कि उन्होंने अगर स्टांस चेंज कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि दिसंबर में रेपो रेट कट हो जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि यहां पर GDP में फोरकास्ट जो है वहां पर कोई बदलाव होता है, क्योंकि जो 5.4% के आंकड़े आए हैं वो थोड़े चिंताजनक रहे हैं। और साथ ही इन्फ्लेशन के फोरकास्ट में कोई बदलाव है क्योंकि जो नंबर हैं यहाँ पर वो शॉकर रहे हैं अगर हम आंकड़ों की बात करें CPI के फ्रंट पे। हालांकि एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे जाके वो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उस पर अलाइन हो जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास का जो ऑफिशियल टर्म है वो 10 दिसंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन वहां पर कोई बदलाव होता है कि नहीं, वहां पे कोई कमेंट आता है, तो ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। हालांकि अनाउंसमेंट तो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी वहां पे जरूर सवाल पूछे जाएंगे कि क्या उनका टर्म एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, डन। तो अंकुर आप थोड़ा नज़र बना के रखिएगा और जैसे हमेशा की तरह आप हमेशा सबसे पहले हमको थोड़ा गाइड करते हैं, इस बार भी कीजिएगा ज़रूर। दीपक अग्रवाल जी, पहले मैं इस बार आपके पास आ रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया कि मार्केट में ये खबर उठने लगी कि भी रेपो रिवर्स रेपो में चेंज नहीं करेंगे हम, जो ट्रेडिशनली किए जाते हैं, लेकिन इस बार एक स्टेप आगे आके हम CRR में चेंज करेंगे और वो भी 0.25। आपको और मेरे को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम तो फील नहीं हो रही है मार्केट के अंदर, ये बात तो सच है। और CRR टिपिकली लिक्विडिटी को ही पंप करने के लिए होता है। ऐसा क्यों है कि इस बार CRR की बातचीत हो रही है? यस, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। अगर देखेंगे, हमने लास्ट पॉलिसी में RBI ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल की थी अक्टूबर महीने में। बट अगर हम देखेंगे अक्टूबर से अब तक हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स करीब $50 बिलियन से कम हुए हैं। उसमें से $25 बिलियन करीब RBI ने इंटरवेंशन किया है, जहां पे RBI ने डॉलर्स बेचे और लिक्विडिटी सिस्टम से बाहर निकाली है। इसके कारण बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी जो अर्ली अक्टूबर में करीब 5 लाख करोड़ के करीब थी, लिक्विडिटी विड्रॉल के कारण फेस्टिवल सीजन में करेंसी सर्कुलेशन भी आपकी बढ़ी है, तो जो बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी 5 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ के करीब आ चुकी है। दिसंबर महीने में एडवांस टैक्स होगा और करेंसी इन सर्कुलेशन हम देखते हैं कि फोर्थ क्वार्टर में भी बढ़ती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि मार्च तक आपकी बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी 0 या डेफिसिट मोड में चली जाए। नाउ जब भी आपने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल कर दी है, तो आपके ओवरनाइट रेट्स जो है वो रेपो रेट के करीब होने चाहिए या रिवर्स रेपो रेट या SDF रेट के करीब होने चाहिए, मतलब 6.25 से 6.5 के बीच में होने चाहिए। बट लास्ट एक महीने से आपके रेपो रेट जो है टाइट लिक्विडिटी के कारण 6.75 के करीब है। इसलिए सिस्टम में जब RBI ने अपनी स्टांस न्यूट्रल कर दी है, आपकी सेकेंड क्वार्टर ग्रोथ वीक है, आपको सिस्टम में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी पड़ेगी। लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए आपके पास 2-3 टूल है। या तो आप लॉन्ग टर्म वेरिएबल रिवर्स रिपो कर सकते हैं, या आप CRR कट कर सकते हैं,
या आप ओएमओ कर सकते हैं। ओएमओ के जरिए लिक्विडिटी आप ज्यादा समय में इन्फ्यूज करेंगे, लेकिन सीआरआर कट के थ्रू 50 बेसिस पॉइंट सीआरआर कट के थ्रू आप 1,10,000 करोड़ लिक्विडिटी सिस्टम में इन्फ्यूज करेंगे। आपने 2022 में जब भी रेट बढ़ा रहे थे तो 50 बेसिस पॉइंट सीआरआर आपने बढ़ाया था। अभी जब सिस्टम को उसकी जरूरत है, आप 50 बेसिस पॉइंट सीआरआर कट करके 1,10,000 करोड़ लिक्विडिटी सिस्टम में इन्फ्यूज करेंगे, जिस तरह से आप रेट कट नहीं करते हुए ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक थोड़ी कैलकुलेशंस आपसे हमने समझी ज़रूर है, लेकिन हाँ मार्केट इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करेगा अगर सीआरआर कट आता है तो, और काफ़ी दिनों बाद, मैं बोलूँगा काफ़ी महीनों बाद इस तरह की अनाउंसमेंट होती है। सुनील सर भी हमारे साथ हैं। सुनील सर, दो अलग अलग कॉर्नर्स हैं। फर्स्ट, यहाँ से कई हज़ार किलोमीटर दूर जब फेड चेयरपर्सन बोलते हैं तो वो कह रहे हैं अभी तो ज़रूरत नहीं है ब्याज दरें काटने की, उन्होंने रिसेंटली जवाब दिया। लेकिन उन्हीं 1000 किलोमीटर दूर वापस अपने भारत में आ जाते हैं तो यहाँ पे लगता है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भैया कट नहीं करोगे तो मेरे को और नीचे जाना होगा। तो किसकी सुने आरबीआई गवर्नर, उस जीडीपी की जो थोड़ी कम होके आई है, प्रोजेक्शन कम है, या फिर उस फेड चेयरपर्सन की जो सभी सेंट्रल बैंकों का बाप है? सुनेंगे आरबीआई गवर्नर सुनेंगे बस एक ही चीज, इन्फ्लेशन फोरकास्ट के ऊपर, राइट। उनका देखिए, आप हमें बहुत चिंताजनक चीज है कि ग्रोथ 5.4 आ गई, पर मैं आपको रिमाइंड करूंगा कि एट 5.4 भी इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। ऐसा नहीं है कोई हम रिसेशन डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक स्लोडाउन हुआ है, उसका कारण भी साफ साफ दिखा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कमी के कारण और इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण ग्रोथ में असर आई है। अब आरबीआई की स्कोप में क्या होता है कि अगर ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए वो रेट कट कुछ सोचे तो इन्फ्लेशन और भी आगे दौड़ सकता है डिमांड साइड के जरिए। आज इन्फ्लेशन सप्लाई साइड से ही आगे बढ़ रहा है क्योंकि फूड के प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं, इसीलिए फूड इन्फ्लेशन ज्यादा है। अब अच्छी मॉनसून का ऐलान है तो आने वाले जो क्वार्टर में शायद इन्फ्लेशन घट सकती हो। तो मेरे ख्याल में आरबीआई की जो एक्शंस है वो सिर्फ और सिर्फ इस इन्फ्लेशन फोरकास्ट के ऊपर, अभी जो हुआ इन्फ्लेशन हाई हुआ उसके ऊपर भी ज्यादा चर्चा नहीं होगी, मगर क्या आने वाले दिनों में उनको लग रहा है कि इन्फ्लेशन 4% के नीचे, ये भी याद रखना है अभी 6.5 के लेवल पे है, तो बहुत गिरावट आनी चाहिए इन्फ्लेशन में, जबकि उनको कंफर्ट आ सकती है रेट कट के बारे में सोचने के लिए, राइट। तो मेरे ख्याल में ना ही ये ग्रोथ की जो स्लोडाउन है, ना ही जो फेड की बात है, इन दोनों पे उतना ध्यान नहीं होगा, मगर ज्यादा ध्यान होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी पिछले स्पीकर ने बताया था, करेंसी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टूल है आरबीआई के हाथ में, और वो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फेड के चेयरमैन के लिए नहीं है। फेड के चेयरमैन डॉलर की रेट के बारे में कुछ फिक्र नहीं करते, मगर इमर्जिंग कंट्री होने के नाते करेंसी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और आरबीआई के एफर्ट्स ने रुपी को एक्चुअली, हमको दिख रहा है आंकड़े में कि वीकन हुआ है, बट एक्चुअली आप इफेक्टिव एक्सचेंज रेट देखे बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में देखिए, हमारी रुपी एक्चुअली स्ट्रेंथन हुई है आरईआर बेसिस में। तो ये बहुत बढ़िया काम किया है आरबीआई ने। तो लिक्विडिटी का जो उन्होंने सकआउट किया है, अपने ओन एक्शंस के कारण उन्होंने लिक्विडिटी को सकआउट किया है, शायद उसको रेस्टोर करने के लिए उनकी सोच आ सकती है। तो रेट कट का कोई ये नहीं है। पर एक और चीज मैं कहूंगा कि इस बार कमेंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है लिक्विडिटी, एक तरफ है रेट फोरकास्ट, इन्फ्लेशन फोरकास्ट, मगर कमेंट्री क्यों मैं कह रहा हूं कि 3 क्वार्टर से आरबीआई ने अपना ग्रोथ का अनुमान बदला नहीं, 7.2 पे टिक के रहते हैं, जो हमें ग्राउंड में दिख रहा था कि गिर रहा है। क्या इस बार आरबीआई गवर्नर मानेंगे कि ग्रोथ 7.2 नहीं होगी इस साल में, और उसके बेसिस पे क्या वो डिसीजंस लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के पॉलिसी में। बिल्कुल सुनील सर, बेहद इंपॉर्टेंट टेक अवेज आपकी तरफ से। इन्फ्लेशन कंट्रोल सबसे पहली चीज, दीपक अग्रवाल ने भी कहा करेंसी के सिनेरियोज जो हैं उसे भी एक बार देखना होगा, और साथ ही क्लियरली लिक्विडिटी जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। देखिए लिक्विडिटी जो है वो कंसर्न तो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए, और अगर सीआरआर में कट आ जाता है 50 बेसिस पॉइंट्स का, तो दीपक जिस तरह से हमें बता रहे थे लिक्विडिटी
इन्फ्यूजन होता हुआ बैंकिंग सिस्टम में दिखेगा ऑलमोस्ट 1.2 लाख करोड़ का, विच इज रिक्वायर्ड, और इस कंसर्न को मिटिगेट करने की बेहद जरूरत है। ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ किस तरह से होगा, ये सारी की सारी चीजें फोकस में होंगी। लेकिन अर्श मोगरे हमारे साथ। अर्श, गुड मॉर्निंग, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। इन्फ्लेशन, करेंसी सिनेरियो, लिक्विडिटी पर जहां हम बात कर रहे हैं, लिक्विडिटी के साथ साथ क्रेडिट ग्रोथ को भी नहीं भूलना चाहिए। गिवन दैट क्रेडिट ग्रोथ जो है सिस्टम में इस वक्त स्ट्रांग है, सिनेरियोज जो है पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आरबीआई सिग्नल करेगा लिक्विडिटी एडिक्वेट प्रॉपर्ली मेजर आउट करने के लिए और इन्फ्लेशन को भी स्टोक आउट नहीं होने देगा? और इन सिनेरियोज का जब हम लिक्विडिटी को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, सेक्टर्स लाइक रियल एस्टेट, सेक्टर्स लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पर असर कैसा दिखेगा? जी, थैंक यू। मुझे लगता है कि आरबीआई की दिसंबर मीटिंग में एक स्टेटस को रहेगा इन टर्म्स ऑफ द रेपो रेट, क्योंकि रेपो रिकॉर्ड लो के पास में है और लिक्विडिटी सिस्टम में सिर्फ अराउंड रुपीज 1.4 बिलियन रह गया है, जो सितंबर के 4.8 बिलियन से गिर गया है। इस वजह से मुझे लगता है एक 50 बेसिस पॉइंट सीआरआर कट की संभावना है, जो लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद करेगा। दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है कि जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5.4% हो गई है एंड इन्फ्लेशन इज 6.2%, जो आरबीआई के 6% के टॉलरेंस लेवल से ऊपर है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन इज 3.7%, जो कंट्रोल में है। लॉट ऑफ इट वाज द फूड प्राइसेस, जो जो अभी स्टेबलाइज हो रहे हैं एज द विंटर सीजन्स आर अप्रोचिंग। इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी स्टैंस न्यूट्रल से अकोमोडेटिव हो सकती है, जो फ्यूचर रेट कट्स का रास्ता खोलेगी। सो इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड गाइडेंस, मेरे को लगता है कि द आरबीआई गवर्नर विल साउंड डविश एंड प्रिपेयर मार्केट्स फॉर रेपो रेट कट इन द फरवरी मीटिंग। आरबीआई का फोकस अब बैलेंस बनाने पर है, स्लो ग्रोथ और इन्फ्लेशन का प्रेशर के बीच। सो लगता है आरबीआई अब अपने मॉनेटरी पॉलिसी बाजार में टाइट रोप वॉकिंग का मजे ले रही है। राइट तो फरवरी में रेट कट की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। जी हाँ, सबसे अहम तो यही रहेगा देखना कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ फोरकास्ट को लेकर क्या कुछ कमेंट्री आती है। पर दीपक जी, मैं आपसे एक और बात समझना चाहूँगी कि देखिए, जिस तरीके से निराशा हाथ लगी है जीडीपी के नंबर्स पर, अभी भी अगर हम इन्फ्लेशन के डेटा को देखें तो वो ऑन द हायर साइड है। ऐसे में कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि जो ग्रोथ का फोरकास्ट है, जो कि फुल ग्रोथ फोरकास्ट कुछ 7.2% पे था, वो भी थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है। तो आपसे समझना चाहेंगे वहाँ पर आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या यहाँ पर एक रिविजन होगा, और अगर होगा तो वो कितना हो सकता है? देखिए, अगर हम फर्स्ट हाफ ग्रोथ देखें तो फर्स्ट हाफ ग्रोथ करीब 6% के करीब है, बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में आप 6.7 से ग्रो हुए थे और सेकंड क्वार्टर में 5.4, तो फर्स्ट हाफ ग्रोथ करीब 6% के करीब है। सेकंड हाफ ग्रोथ में हमारा मानना है, सेकंड क्वार्टर की वीकनेस देखते हुए आरबीआई शायद सेकंड क्वार्टर ग्रोथ, सेकंड हाफ की ग्रोथ प्रोजेक्शन 7 से 720 के करीब रखे, जिसके कारण आपकी फुल ईयर ग्रोथ जो है वो करीब 650-660 है। तो अक्टूबर महीने में जब आरबीआई ने पॉलिसी अनाउंस की थी, उनकी FY25 की ग्रोथ प्रोजेक्शन 720 की थी। हमें लगता है कि ये पॉलिसी में वो ग्रोथ प्रोजेक्शन डाउनवर्ड रिवाइज होगा, और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन जो है ये साल की जो आरबीआई की 450-460 के करीब थी, थर्ड क्वार्टर में हायर इन्फ्लेशन के कारण ये साल की इन्फ्लेशन फोरकास्ट शायद आरबीआई 470 कर दे। बट मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए, और FY26 में हमारी इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन, हमें लगता है कि आरबीआई फुल ईयर FY26 या फर्स्ट हाफ FY26 की इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन 4.10 से 4.20 के बीच में रखेगा। एब्सोल्युटली। फ्यू मिनट्स और क्रेडिट पॉलिसी के टेक अवेज अनाउंसमेंट्स हमारे सामने होंगे। सुनील सर, क्विकली आपसे जानना चाहूंगी, आरबीआई की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी पर किस तरह से फोकस करना चाहिए, किस तरह की लैंग्वेज या सिग्नल है जिसे हमें वॉच आउट करना होगा इस पॉलिसी स्टेटमेंट में, दैट कुछ सिग्नल की आरबीआई जो है लॉन्गर टर्म इकोनॉमिक आउटलुक पर फोकस कर रही है? क्या सारी चीजें कम्युनिकेशन में ध्यान रखनी है? इंक्रीज इन अकोमोडेशन। सेकंड होगी लैंग्वेज की, हम ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अभी रेट कट नहीं करें, फिर भी उनकी लैंग्वेज होनी चाहिए कि हम ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं और अगर जरूरत पड़े तो रेट के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ऐसी एक कमेंट्री ही काफी होगी मार्केट्स के लिए। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। Every 2 months, I have been presenting the monetary policy statement on behalf of the
Monetary Policy Committee and the Reserve Bank of India before you. In fact, a detailed, elaborate statement presenting before all of you is a practice which we started during the period of the COVID, when there were lockdowns and restrictions. We considered that this was the most appropriate way of communicating with the people and with every stakeholder in the economy. Monetary policy is important because it affects the life of people. It affects each and every segment of the economy, howsoever small or big. It affects the vegetable vendors. It affects the big corporates. It affects the middle class. I think it also affects the farmers, the industry, the business. So it has wide-ranging impact on the economy, and that is why I'm sure that is the reason why most of you are listening to the governor's statement. Our effort is to follow the flexible inflation targeting framework as provided in the Reserve Bank of India Act. The Act provides that the Reserve Bank, that is the Monetary Policy Committee, is expected to maintain price stability. In fact, it is a mandate. The mandate given to the Reserve Bank of India is to maintain price stability while supporting or keeping in mind the objective of growth. Price stability is important for the people because it affects their purchasing power. It is important for stability of businesses. It is important for exporters and importers. It is important for every segment of the economy. So price stability is important. At the same time, growth is also very important. As an economy, India has been growing in the last 3 years at more than 8%. Growth, that is the GDP growth, the growth of the gross domestic product, is also very important. And as provided in the law, it is always our effort at the Reserve Bank of India, it is also the effort of the Monetary Policy Committee to follow the provision of the law as embedded, as provided for in the Reserve Bank of India in letter and spirit. So with these opening remarks, I present before you the monetary policy statement of today. And this is how it goes. As we stand at the threshold of 2025, let me reflect upon the eventful journey of 2024. In line with the trend in the last few years, central banks were once again put to the ultimate test to stabilize their economies against continuous, colossal, and complex shocks. Central banks are constantly adapting to the new global economic and financial landscape created by geopolitical conflicts, geoeconomic fragmentation, financial market volatility, and continuing uncertainties, all of which are testing the resilience of the global economy. The last mile of disinflation is turning out to be prolonged and arduous, both for the advanced economies as well as the emerging market economies, that is the EMEs. Maintaining macroeconomic and financial stability and building buffers continue to be the lodestar, especially for the emerging market economies. In India, notwithstanding the recent aberration in growth and inflation trajectories, the economy continues its journey on a sustained and balanced path towards progress. Amidst the reshaping of the global economy, India is well positioned to benefit from the emerging trends as it forges ahead on a transformative journey. Let me now turn to the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee, which met on 4th, 5th, and today 6th December. After detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, because monetary policy is forward-looking, so we have to always look at the outlook, the Monetary Policy Committee decided by a majority of 4:2 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%.
5%. The MPC also decided unanimously to continue with the neutral stance and to remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. The MPC took note of the recent slowdown in the growth momentum, which translates into a downward revision in the growth forecast for the current year. Going forward into the second half of this year and the next year, the MPC assessed the growth outlook to be resilient, but warranting close monitoring. Inflation, on the other hand, surged above the upper tolerance band of 6% in October, driven by a sharp uptick in food inflation. Food inflation pressures are likely to linger in Q3 of the current financial year and start easing only from the Q4 of the current financial year, that is from January to March. And we expect that this is the trend and it will be backed by seasonal correction in vegetables prices, Kharif harvest arrivals, likely good Rabi output and adequate cereal buffer stocks. High inflation reduces the disposable income in the hands of consumers and dents private consumption, which negatively impacts the real GDP growth. The increasing incidence of adverse weather events, heightened geopolitical uncertainties, and financial market volatility pose upside risks to inflation. The MPC believes that only with durable price stability can strong foundations be secured for high growth. The MPC remains committed to restoring the inflation growth balance. I repeat, the MPC remains committed to restoring the inflation growth balance in the overall interest of the economy. Accordingly, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting and also to continue with the neutral stance of monetary policy as it provides flexibility to monitor and assess the outlook on inflation and growth and then go on to act appropriately. I would now like to provide an assessment of growth and inflation, and I would like to begin with the global growth scenario. The global economy has shown unusual resilience in 2024 despite several headwinds. Inflation is gradually moving towards the target from its multi-decadal highs, prompting several central banks to embark on policy pivots. Global trade remains resilient, with increasing volumes confined within geographical blocks. Since the last MPC meeting, financial markets have remained edgy amidst rising US dollar and hardening bond yields, resulting in large capital outflows from emerging markets and also in volatility in equity markets. Going forward, the outlook is clouded by rising tendencies of protectionism. I'm talking about the global economy. Going forward, the outlook is clouded by rising tendencies of protectionism, which have the potential to undermine global growth and also push inflation higher. Let me now turn to the domestic growth situation. Growth in real GDP in the second quarter of this year at 5.4% turned out to be much lower than anticipated. This decline in growth was caused mainly by a substantial deceleration in the industrial growth from 7.4% in the first quarter to 2.1% in the second quarter due to subdued performance of manufacturing companies, contraction in mining activity, and lower electricity demand. The weaknesses in the manufacturing sector, however, was not broad-based, but was limited to specific sectors such as petroleum products, iron and steel, and cement.
Going forward, high-frequency indicators available so far suggest that the slowdown in domestic economic activity bottomed out in the second quarter of this year, and it has since recovered, aided by strong festive demand and pickup in rural activities. Agricultural growth is supported by healthy Kharif crop production, higher reservoir levels, and better Rabi sowing. Industrial activity is expected to normalize and recover from the lows of the previous quarter. The end of the monsoon season and the expected pickup in government capital expenditure may also provide some impetus to cement as well as iron and steel sectors. Mining and electricity are also expected to normalize post the monsoon-related disruptions. I specifically commented on these sectors, that is on manufacturing, on electricity, and also on mining and iron and steel, as well as on cement, because these were the sectors, particularly in manufacturing, mining, and electricity demand, which were the principal factors which pulled down the GDP number in second quarter. So that's why I focused how these three sectors are expected to behave in the current quarter as well as in the next quarter. The Purchasing Managers Index, that is PMI for manufacturing at 56.5 for November, remained elevated. The supply chain pressures eased in October-November and fell below the historical average. The services sector continues to grow at a strong pace. PMI services remained steady at 58.4 in November, indicating continued expansion. On the demand side, rural demand is trending upwards, while urban demand shows some moderation on a high base. Government consumption is improving. Investment activity is also expected to improve. On the external front, merchandise exports expanded by 17.2% in October, while services exports continued to post upbeat growth at 22.3% in October. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for 2024-25, that is the current year, is now projected at 6.6%, with Q3 at 6.8% and Q4 at 7.2%. Real GDP growth for the first quarter of 25-26 is projected at 6.9% and the second quarter of 25-26 at 7.3%. The risks are evenly balanced. I would now like to focus on inflation. Inflation increased sharply in September and October 2024, led by an unanticipated increase in food prices. Core inflation, though at subdued levels, also registered a pickup in October. Fuel group remained in deflation for the 14th consecutive month in October. In the near term, despite some softening, lingering food price pressures are likely to keep headline inflation elevated in the third quarter, that is, in the quarter October to December. Going ahead, a good Rabi season would be critical to the softening of food inflation pressures. Early indications point to adequate soil moisture content and reservoir levels, conducive for Rabi sowing. The estimates of record Kharif production should bring relief to elevated prices of rice and tur dal in particular. Vegetable prices are also expected to see a seasonal winter correction. On the upside, the evolving trajectory of domestic edible oil prices following the hike in import duties and rise in their global prices need to be monitored closely. Manufacturing and services firms surveyed by the Reserve Bank point to firming up of input costs and selling prices in the fourth quarter of the current financial year, that is in the quarter January to March. Taking all these factors into consideration,
CPI inflation for the current financial year, that is 24-25, is projected at 4.8%, with Q3 at 5.7%, Q4 at 4.5%. Going into the next year, next financial year, CPI inflation for the first quarter of 25-26 is projected at 4.6% and Q2 at 4%. The risks are evenly balanced. Now, what do these inflation and growth conditions mean for monetary policy? I have described the growth conditions. I have described the inflation conditions. Now, what do all these factors mean for monetary policy? And that is what I would like to now highlight. The near-term inflation and growth outcomes in India have turned somewhat adverse since the last monetary policy in October. The medium-term prognosis on inflation suggests further alignment with the target, while growth is expected to pick up its momentum. Persistent high inflation reduces the purchasing power of consumers and adversely affects both consumption and investment demand. The overall implication of these factors for growth is negative. Therefore, price stability is essential for sustained growth. On the other hand, a growth slowdown, if it lingers beyond a point, may need policy support. The Reserve Bank's anti-inflationary monetary policy stance has been a crucial factor in bringing about a significant disinflation. Going forward, as food price shocks wane, headline inflation is expected to ease and realign with the target as per our projections, which I just read out. At present, it is necessary to draw on the flexibility provided by the neutral stance of monetary policy to wait for and monitor the incoming data for confirmation of the decline in inflation. The gains achieved so far in the broad direction of disinflation, notwithstanding the recent upticks, need to be preserved. At the same time, the growth trajectory and the evolving outlook also need to be monitored very closely. At this critical juncture, prudence and practicality demand that we remain careful and sensitive to the dynamically evolving situation with all its complexities and ramifications. A status quo in monetary policy in this meeting of the MPC has thus become appropriate and essential. I would now like to turn to liquidity and financial market conditions. System liquidity as represented by the net position under the LAF, that is net LAF, that is net liquidity adjustment facility, it continued to remain in surplus during October and November on account of higher government spending, despite a significant increase in currency in circulation during the festive season and capital flows. Of course, towards the end of November, for a few days, the liquidity became tight, but overall, I think there was adequate liquidity both in October and November, and it remained in surplus. Given these conditions, the Reserve Bank mainly conducted variable rate reverse repo operations, that is VRR operations, to absorb surplus liquidity. To alleviate temporary liquidity tightness because of large GST outflows, however, fine-tuning variable rate repo operations, that is VRR operations, were conducted intermittently during October and November. The two-way liquidity operations of the Reserve Bank ensured close alignment of the interbank overnight rate with the policy repo rate. Transmission to the credit market has been satisfactory. As you would have noticed, as in the previous monetary policy statements, a lot of data is given in the footnotes. So those of you who are interested may have a look at the footnotes, because the data in the footnotes justify and back up whatever I am saying as a part of my statement. Now, even as liquidity in the banking system remains adequate,
System liquidity may tighten in the coming months due to tax outflows, increase in currency in circulation, and volatility in capital flows. To ease the potential liquidity stress, it has now been decided to reduce the cash reserve ratio, that is, to reduce the CRR of all banks to 4% of net demand and time liabilities, that is NDTL. And this will be done in two equal tranches of 25 basis points each, with effect from the fortnight beginning December 14th and December 28th. This will restore the CRR to 4% of NDTL, which was in fact the prevailing rate before commencement of the policy tightening cycle in April 2022. The reduction in CRR is consistent with the neutral policy stance and would increase primary liquidity of about rupees 1.16 lakh crore, that is 1,16,000 crore to the banking system. Going forward, the Reserve Bank will continue to be nimble and proactive in its liquidity management operations to ensure that money market interest rates evolve in an orderly manner and the productive requirements of the economy are met. During 2024-25, that is from the period April to November, the Indian rupee depreciated by 1.3%, largely due to pressure from strengthening US dollar and selling pressure by foreign portfolio investors, especially in October and November. Nevertheless, both the depreciation of the Indian rupee and its volatility was less compared to its EME peers. And this reflects India's strong macroeconomic fundamentals and improvement in the external sector outlook. The Reserve Bank's exchange rate policy has remained consistent over the years, and it is market determined. Its central tenet is to maintain orderliness and stability without compromising market efficiency. Foreign exchange reserves are deployed judiciously to mitigate undue volatility, maintain market confidence, anchor expectations, and preserve overall financial stability. These interventions focus on smoothing excessive and disruptive volatility rather than targeting any specific exchange rate level or band. At the same time, our effort to deepen and modernize the foreign exchange market have also yielded significant results in terms of, first, widening access and participation, and second, ensuring efficient price discovery. Our overall approach ensures that forex reserves act as shock absorbers, safeguarding the economy from external spillovers, while supporting competitive and orderly market conditions. The flexible or market-determined exchange rate regime is not merely a tool for managing external shocks. It is an important element of our approach to macroeconomic and financial stability. By combining market discipline with prudent intervention, we have created a system that supports stability, resilience, and growth. Let me now focus on financial stability. The financial parameters of banks and NBFCs continue to be strong. The incoming data suggest that the gap between growth of credit and deposits of scheduled commercial banks has narrowed, with deposits keeping pace with loan growth. In fact, on the financial sector, I can say with confidence that I think the health of the financial sector today is perhaps at one of its best in a long time. The Reserve Bank supervision of the financial sector and its entities continues to be vigilant and proactive. Incipient signs of stress, if any, either at the systemic or entity levels, are monitored closely and proactive action is initiated. The effort is always to resolve the issues non-disruptively. Continuous engagement is held over several months
sometimes even exceeding 1 year, with the regulated entities. Only in extreme cases where sufficient corrective action is not visible, the Reserve Bank resorts to imposition of business restrictions as a last resort in the interest of consumers and financial stability. In fact, there are a large number of entities where the corrective action is taken and where we simply do not take any action because the response by the regulated entities is found to be, very proactive and, very responsive. And so in many cases, without imposing any restrictions on their business or other kinds of activities, the problem gets resolved. Obviously, the list is not known outside. That list is much longer. And the total number of entities, I'm not being defensive about it or in any way. Why I'm emphasizing on this is that this is something which we have to do in the interest of stability of the system as well as the stability and health of the individual entities. So only in extreme cases where sufficient corrective action is not visible, the Reserve Bank resorts to imposition of business restrictions as a last resort in the interest of consumers and financial stability. To address the issues of unclaimed deposits, inoperative accounts and frozen accounts due to pendency of KYC updation, banks have been advised very recently once again to take necessary steps urgently to bring down the number of such accounts and make the process hassle-free. Further, banks have been advised to segregate the accounts of beneficiaries of various central and state government schemes through direct benefit transfer, that is DBT, and facilitate uninterrupted credit of the DBT amounts into their accounts and also utilization of the DBT amounts by the account holders. And we have advised the banks to do it without inconveniencing such vulnerable segments of customers, because the DBT beneficiaries are usually, and they are the vulnerable sections of the society. So being fully mindful of that, we have emphasized that there should be a kind of a seamless and smooth flow of DBT amounts into the bank accounts of such individuals in a situation so that it facilitates, the individuals to withdraw the money to meet their various requirements. Progress made by individual banks in this regard will be monitored by the Reserve Bank. I would now like to turn to the external sector. The statement today is a bit, because we have too many announcements, so I request your continued patience. External sector. India's merchandise exports expanded at a 28-month high pace in October. Merchandise imports also increased for the 7th consecutive month. Services exports sustained buoyancy and posted double-digit growth in second quarter as well as in October 2024. The robust services exports, together with strong remittance receipts, are expected to keep the current account deficit within sustainable levels during 24-25. On the external financing side, gross FDI to India increased at a robust pace. I'm talking about gross. The gross FDI to India increased at a robust pace during the first half of the year. Net FDI, however, moderated during this period due to higher repatriations and rising outward FDI. Foreign portfolio investment, that is FPI inflows to EMEs have generally declined in October. Net FPI inflows to India stands at $9.3 billion so far in the current year, that is from April to December 4th. And this was supported mainly by inflows in the debt segment. External commercial borrowings and non-resident deposits, on the other hand, witnessed higher net inflows compared to the last year. India's external sector remains resilient, as reflected in various key indicators where India has been consistently performing well. And the key indicators and the data they are given in the footnotes. In order to attract more capital flows,
in order to attract more capital inflows, it has been decided to increase the interest rate ceilings on FCNRB deposits. Accordingly, effective from today, banks are permitted to raise FCNRB deposits of 1 year to less than 3 years maturity at rates not exceeding the ceiling of overnight alternate reference rate, that is overnight ARR, plus 400 basis points as against 200 basis points at present. So in addition to the overnight ARR, currently the banks are allowed a spread of 250 basis points that is being increased to 400 basis points. Similarly, for deposits of 3 to 5 years maturity, the ceiling has been increased to overnight ARR plus 500 basis points as against 300 basis points at present. This relaxation will be available till 31st March 2025. I shall now announce certain additional measures. I again request your patience because the additional measures, they are very important. The first one relates to the FX retail platform, and this is how it is. The FX retail platform, which was launched in 2019, is now proposed to be linked with the Bharat Connect platform of the NPCI. This would enable users to transact on the FX retail platform through mobile apps of banks and non-bank payment system providers. This will expand the reach of FX retail platform, enhance user experience, and promote fairness and transparency in pricing with adequate safeguards. The second announcement relates to introduction of secured overnight rupee rate, SORR, a benchmark based on secured money markets. With a view to further develop the interest rate derivative market in India and improve the credibility of interest rate benchmarks, the Reserve Bank proposes to introduce a new benchmark, namely secured overnight rupee rate, that is SORR, which is based on all secured money market transactions, that is overnight market repo as well as TREPs. The third announcement relates to Connect to Regulate, an initiative for open regulation. As part of Reserve Bank's consultative approach in framing regulations, a new program, namely Connect to Regulate, will be launched under the ongoing RBI at 90 commemorative events. A dedicated section in the Reserve Bank's website will be made available for stakeholders to share their ideas and inputs on specific topics. So we will give out a specific topic on that. We are not going to upload a discussion paper or anything, but we will just mention the topic, and we would like all stakeholders to give their opinion, suggestion and thoughts to the RBI. So it is that makes our process of consultation much wider and much more flexible, which has been our approach over the last few years. Next announcement is introduction of podcast facility as an additional medium of communication. Over the years, the Reserve Bank has expanded its communication toolkit and techniques to enhance transparency and better connect with the people. In continuance of this endeavor, the Reserve Bank proposes to add podcasts to its communication toolkit for wider dissemination of information. And the next announcement which I am going to read out is very important for the agricultural sector, especially for small farmers. And that relates to collateral-free agricultural loan enhancement of limit. The limit for collateral agricultural loans was last revised in 2019. Taking into account the rise in agricultural input costs and overall inflation, it has been decided to increase the limit for collateral-free agriculture loans from rupees 1.6 lakh crore per borrower to rupees 2 lakh per borrower. This will further enhance credit availability for small and marginal farmers. The next announcement
relates to UPI. I am sorry. A credit line on UPI was launched in September 2023 and was made available through scheduled commercial banks. It has now been decided to permit small finance banks also to extend pre-sanctioned credit lines through the UPI. This will further deepen financial inclusion and enhance formal credit, particularly for the new-to-credit customers. Next announcement relates to artificial intelligence, its deployment in a very prudent manner. The financial sector landscape is witnessing rapid transformation enabled by technologies such as AI, tokenization, cloud computing, etc. In order to harness the benefits from these technologies while addressing the associated risks such as algorithmic bias, explainability, data privacy, etc., a committee comprising of experts from diverse fields will be set up to recommend a framework for responsible and ethical enablement of AI. I repeat, a framework for responsible and ethical enablement of AI, and the acronym is Free AI in the financial sector. The last announcement relates to dealing with mule accounts. As part of the Reserve Bank's continued efforts to prevent and mitigate digital frauds, an innovative AI/ML-based model, namely the MuleHunter.ai, has been developed by the Reserve Bank Innovation Hub at Bengaluru. This will help the banks to deal with the issue of mule accounts expeditiously and reduce digital frauds. Let me now conclude. The world today is characterized by intricate complexities and profound uncertainties. As a central bank, our job is that of an anchor of stability and confidence, which would ensure that the economy achieves sustained high growth. Since the last policy, that is, since the October policy, inflation has been on the upside, while there has been a moderation in growth. Accordingly, the MPC has adopted a prudent and cautious approach in this meeting to wait for better visibility on the growth and inflation outlook. At such a critical juncture, prudence, practicality, and timing, I repeat, at such a critical juncture, prudence, practicality, and timing of decisions become even more critical. Our endeavor in the Reserve Bank has always been to implement timely and carefully calibrated measures to derive the maximum impact. This will continue to be the guiding principle for all future actions also. As Mahatma Gandhi had said, and I quote, "There is nothing that cannot be attained by patience and equanimity." In the last few years, we have traversed one of the most difficult periods in the history of the Indian economy and perhaps in the global economy. And this has been a very difficult period in the economic history, in the history of Indian economy and the global economy, just as I pointed out. It was a period of relentless turbulence and jolts. As a country, we can derive satisfaction that the Indian economy has not just navigated this period of trials successfully, but has emerged stronger. As we strive together towards making India a developed economy, I recall what I had said in my statement of February 8, 2023, wherein I had quoted Netaji Subhash Chandra Bose, "Never lose your faith in the destiny of India." Thank you. Namaskar. ठीक है, तो ये क्रेडिट पॉलिसी को लेकर हमारी खास कवरेज है और इस कवरेज के अंदर मिस्टर गवर्नर ने सारी बातें जो रखी हैं वो सारी की सारी बातें मार्केट्स पे अपना इम्पैक्ट डाल रही हैं। पहले 10 मिनट तक तो समझ में नहीं आया कि क्या CRR कट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जब मिस्टर गवर्नर ने कहा कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन या फिर कैश इन्फ्यूजन्स मार्केट्स के अंदर आ जाएगा, तो उसके बाद ये समझ में आया कि यस CRR कट है।
तो उसके बाद 4.5 से 4% की कोटेशन आई, जो कि CRR कट को बताने के लिए सफिशिएंट थी। इसके अलावा उन्होंने इन्फ्लेशन और GDP भी बात रखी है। GDP पे उन्होंने कहा कि FY25 के लिए GDP का हम अपना अनुमान थोड़ा सा कम कर रहे हैं और उसको 7% से नीचे ले आते हैं। उन्होंने 6.9% GDP कहा। उन्होंने FY25 के लिए इन्फ्लेशन पे भी कहा। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसकी रेशो बढ़ाकर हम 4.8 कर देते हैं। तो स्लाइटली इन्फ्लेशन पे वो कंसर्न दिखे, GDP पे थोड़ा बैकफुट में गए और CRR कट करके उन्होंने काफ़ी हद तक इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश की। और मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो 0.25% का था, लेकिन सरप्राइजिंग फैक्टर ये आया कि आधे % का सीधा CRR कट आ गया। जब बहुत ज़्यादा मांगा जाता है तब भी CRR कट के अंदर आधा % नहीं मिलता, लेकिन इस बार छोटी सी कैलकुलेशंस थी। मार्केट के ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट ठीक सिर्फ कैलकुलेट कर रहे थे कि 0.25% पे कट हो सकता है, लेकिन एक कट आधा % का मिला। एक और चीज़, मिस्टर गवर्नर बहुत सारे और इश्यूज़ पर भी, वो सिर्फ आपको इन्फ्लेशन और आपको GDP या फिर सिर्फ कैपिटल या लिक्विडिटी पे नहीं रख रहे थे, बल्कि उन्होंने RBI की इंपॉर्टेंस मार्केट्स के अंदर बताई। उन्होंने बताया कि कैसे लोग कनेक्टेड हैं RBI की इस मॉनेटरी पॉलिसी से, और उन्होंने पॉडकास्ट जैसे कुछ फेमिलियर चीज़ें जो आजकल ट्रेंडिंग हैं उस सब से भी अवगत कराया। उन्होंने कोलैटरल, नॉन कोलैटरल यानी कि बिना कुछ गिरवी रखे हुए किसानों को जो लोन की सीमा है उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया। ऐसे कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो हमने 10 बड़ी बातों में आपके लिए रखी हैं। और अब आपकी ब्याज दरें कैसे होंगी आधे % CRR कट के बाद, वो भी हम ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर लेके आएंगे। दीपक अग्रवाल, देवांग शाह, विनोद कार्की, मनीष गुप्ता, देवेंद्र पंची, पुनीता कुमार सिन्हा हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपने इस क्रिटिकल डे हमारे लिए समय निकाला और मिस्टर गवर्नर ने जो बात रखी है उसको थोड़ा समझाने की आप हमारी साथ कोशिश करेंगे। पुनीता मैम, पहले तो मैं आपसे शुरू करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मिस्टर गवर्नर ने जो बात रखी इस समय, आप उसको एक बैलेंसिंग अप्रोच रखते हैं कि भैया आधा % CRR कट भी दे दो, और साथ में जो थोड़ी सी निराशा वाली बात है कि GDP पे हम एक स्टेप पीछे, इन्फ्लेशन पे एक स्टेप आगे आ रहे हैं, ये भी बैलेंस हो जाएगा। कुछ बैलेंस लग रहा था। बैलेंस तो बनाया है उन्होंने। और देखिए, जैसे कि US में भी फेड पॉलिसी जो है वो भी एक बैलेंसिंग एक्ट पर चल रही है, क्योंकि जॉब्स डेटा जैसे US में भी नेगेटिव आया है, इन्फ्लेशन यहाँ भी थोड़ी हाई है, पर इकोनॉमी स्लो हो रही है। और इंडिया में भी यही हमको कुछ देखने को आ रहा है कि इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो गई है, पर इन्फ्लेशन थोड़ी सी ऊपर है, तो इसलिए रेट कट किया जाए कि नहीं। तो इसलिए रेट कट क्योंकि नहीं किया है, इसलिए उनको लिक्विडिटी देना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर लिक्विडिटी भी नहीं रिलीज करेंगे और रेट कट भी नहीं करेंगे तो इकोनॉमी पे और नेगेटिव असर हो सकता है। और जैसे कि आपने देखा कि क्रेडिट थोड़ा वीकनेस, क्रेडिट ग्रोथ में भी थोड़ी वीकनेस है, और स्ट्रेस भी थोड़ा दिख रहा है, स्पेशली रूरल एरियाज में, और अनसिक्योर्ड लोन्स में भी थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है। तो इसलिए इकोनॉमी में स्लो डाउन जो है और अर्निंग्स में जो स्लो डाउन है उसको किसी तरह से मैनेज करना है, पर साथ साथ इन्फ्लेशन को भी मैनेज करना है। तो इसीलिए ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत जरूरी था। ठीक है, नहीं ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और मिस्टर गवर्नर ने जो बातें रखी वो सारा कुछ वैसे ही समझ में आ रहा था, और मार्केट भी देखिए वैसे ही कैलकुलेट कर रहा है। जैसे उसको CRR का थोड़ी भनक पड़ी तो मार्केट ने वापस अपने आप को तेज़ किया। कुछ हद तक बैंकिंग, ऑटो स्टॉक्स आप स्क्रीन पर दिखाइएगा। विनोद कार्की भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ICICI सिक्योरिटी से। विनोद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका टेक, मिस्टर गवर्नर को आपने भी सुना, सारे पॉइंट्स आपने भी समझे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने 10 बड़ी बातों में स्क्रीन पर रखा है। एक बार आपका टेक चाहिए सर। इसमें देखिए ऐसा था कि अगर आप गवर्नर की बात सुने ठीक से तो उनका मानना ये है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर हैं H2 में वो पिकअप होने शुरू हो गए हैं। तो जो ग्रोथ H1 में वीक था वो थोड़ा रिवर्स होगा। तो अब ये जो CRR कट आया है तो इससे अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर सच में इम्प्रूव हो रहे हैं तो इसको और बढ़ावा देगा। तो सेकेंड हाफ की ग्रोथ मेरे हिसाब से रोबस्ट हो सकती है। तो इसमें एक ही ध्यान रखना है हमको कि जैसे नवंबर में अभी आप फिलहाल आप फूड प्राइसेस देखें ना, स्टिल हाई हैं,
होप ये है कि फूड प्राइसेस कम हो जाएंगे और उस कारण से, और जो लास्ट प्रिंट आया था उसमें कोर इन्फ्लेशन भी नाजब किया था 20 बिप्स से। तो ध्यान ये देना है मेरे हिसाब से कि अगर सिक्लिकली सेकेंड हाफ में डिमांड पुश ऑफ हो गई है क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम की थी और वेदर कंसर्न्स और ये सब थे, तो अगर ये सीआरआर कट से ये थोड़ा और एक्सेलरेट होता है और इन्फ्लेशन और पिकअप होता है, तो वो मुझे एक रिस्क लगता है। देखना पड़ेगा कि बिकॉज ये जो इन्फ्लेशन प्रिंट थी ना वो 6.2% थी, तो इनके कंफर्ट लेवल के ऊपर थी और कोर इन्फ्लेशन भी बढ़ा था। तो आपने उसमें और थोड़ा वो कर दिया है कि सीआरआर से थोड़ा और ग्रोथ शायद इंप्रूव हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ग्रोथ तो पिकअप हो लेकिन इन्फ्लेशन भी और जोर से पिकअप हो जाए यहाँ से। तो वो एक मेरे को कंसर्न लग रहा है कि इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक बार इन्फ्लेशन हाथ से निकल जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। तो वो एक चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओवरऑल एक बैलेंसिंग एक्ट था, बिकॉज इन्फ्लेशन हाई था तो आपने रेट नहीं काटा और ग्रोथ एकदम ही कम आई जितना इन्होंने सोचा था, उसके हिसाब से एक सपोर्ट दिया है उसको। कार्की का कहना है इन्फ्लेशन पे कंट्रोल, और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल के साथ साथ प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ, साथ साथ बाजार पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे क्रेडिट पॉलिसी के टेक अवेज और अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखे, बैंक निफ्टी में रिकवरी हमने देखी अच्छी खासी मजबूती के बीच, और बैंक्स फाइनेंशियल्स की चाल जो है उस पर भी खास नजर रहनी चाहिए। हमारे साथ देवांग शाह भी जुड़े हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के। देवांग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ पर काफी बड़ा एम्फोसिस यहाँ पर आरबीआई गवर्नर की तरफ से आता हुआ दिखा। उन्होंने ये कहा कि काफी एसेंशियल है प्राइस स्टेबिलिटी सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए। क्या लगता है आपको ये बैलेंस कितना क्रिटिकल है, क्योंकि हम इन्फ्लेशन को तो फेस कर ही रहे हैं, राइजिंग इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं, इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के लिए इस स्टेबिलिटी पर कितना फोकस होना चाहिए, और सेंट्रल बैंक्स के लिए अब ये सिनेरियो कैसे पैन आउट होते हुए दिखेंगे, किस तरह से स्टैगफ्लेशन इन्फ्लेशन के जो रिस्क हैं इसे मिटिगेट कर पाएंगे? थैंक यू फॉर द इन्विटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमारा एक्चुअली मानना था कि पॉलिसी में सीआरआर कट होगा, बिकॉज थॉट प्रोसेस में बैंकिंग लिक्विडिटी काफी टाइट हो चुकी थी, और अभी जो लिक्विडिटी नीड वाज लिक्विडिटी इन्फ्यूजन वाज द नीड ऑफ द आवर। तो आज के दिन में हमको बैंकिंग सिस्टम में जो कोर लिक्विडिटी और बैंकिंग लिक्विडिटी जो 3-4 लाख करोड़ पॉजिटिव थी, अभी वो डेफिसिट में चली गई थी। तो आई थिंक आरबीआई ने एक बहुत अच्छी बैलेंसिंग एक्ट करी है। RBI, our perspective is कि Feb onwards rate cut is on the cards, because I think 3-4 जो बड़े इश्यूज है इन द शॉर्ट टर्म, जैसे एग्जांपल करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ है। जनरली करेंसी डेप्रिसिएशन में RBI रेट कट नहीं करते हैं। दूसरी चीज, उनको ट्रम्प पॉलिसीज का काफी एक अंदाजा आ जाएगा आफ्टर ट्रम्प टेक्स ऑन द पोजिशन फ्रॉम Jan 2025। तीसरी चीज है, आपको बजट पार कर लेंगे आप तो फेब फर्स्ट में बजट अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो आप फिस्कल कंसोलिडेशन देख लेंगे तो मॉनेटरी ईजिंग चालू हो सकती है। और लास्टली हमारे हिसाब से जो इन्फ्लेशन हम दिख रहा था वो भी कवर हो जाएगा। तो हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि फेब ऑनवर्ड्स पॉलिसी रेट कट्स आर ऑन द कार्ड। आरबीआई ने डविश स्टांस लास्ट पॉलिसी में करा, अभी लिक्विडिटी इन्फ्यूज करी है जो रिक्वायरमेंट थी, और नेक्स्ट पॉलिसी ऑनवर्ड्स रेट कट पे ध्यान देंगे, सो दैट एक फाइनेंशियल सिस्टम में जो जरूरत थी रेट की इंक्लूडिंग लिक्विडिटी, वो पूरी हो जाएगी। इंडिया रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट देवेंद्र पंत भी हैं। देवेंद्र जी, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सीआरआर रिडक्शन पर ही आपका टेक, पॉलिसी स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं, और खास तौर से जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन सीआरआर रिडक्शन के बाद सिस्टम में आता हुआ दिखेगा, इकोनॉमी के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए कितना सही साबित होगा? देखिए, हमने जो पिछले 1 साल में देखा, जो रिस्क फ्री जिसे हम बोलते हैं 10 ईयर, वो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हुआ है, परंतु जो MCLR है बैंक्स के लेंडिंग रेट, वो जो है वो डिक्लाइन नहीं हुए, और वो सीधे सीधे असर करता है कि किस तरह से बैंकिंग सेक्टर लिक्विडिटी रही है। जैसे बाकी वक्ताओं ने भी बोला कि जो ये 0.5% जो CRR कट हुआ, एक तो ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, उससे इतना ज्यादा की उम्मीद नहीं थी। बहरहाल जो हुआ है उससे जो है, जैसे ही आपका ओवरनाइट रेट वो उस पर कूल ऑफ आता है, और क्योंकि बैंक्स जो उनका सारा बेंचमार्क जो है, या तो MCLR जो लेंडिंग करते हैं वो या तो MCLR बेस्ड है, या फिर वो एक्सटर्नल बेंचमार्क, तो ज्यादातर MCLR लिंक्ड है।
तो जैसे ही MCLR नीचे आएगा ग्राहकों को कम इंटरेस्ट रेट कम देखने को मिलेगा। परंतु एक मेरा थोड़ा सा डिफरेंट टेक है कि क्या आपका इंटरेस्ट रेट कट होने से कंजम्पशन बढ़ेगा? शॉर्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज नो, क्योंकि जब तक इन्फ्लेशन नहीं कम आएगा, अभी भी देखें जो RBI का मानना है थर्ड क्वार्टर 5.7, अब वो 5.7 के लिए नवंबर और दिसंबर का एवरेज इन्फ्लेशन 5.5 के करीब आना चाहिए, तभी ये 5.7 होगा। अभी जो हालात है उसमें नवंबर का इन्फ्लेशन प्रिंट के चांसेस हैं कि वो ये जो क्वार्टरली एवरेज जो है 5.7 उससे ऊपर रहने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो क्या दिसंबर में ये इतना नीचे आ जाएगा 5% के करीब कि वो एवरेज 5.7 हो? और जब अभी देखिए फ्यूचर गाइडेंस दिया है सेकेंड क्वार्टर में 4%, कि सेकेंड क्वार्टर नेक्स्ट ईयर अगर 4% इन्फ्लेशन आता है तो RBI को ये लगेगा कि हाँ भाई उसने वो अचीव कर लिया, एंड देन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वो रेट कट का उम्मीद ले सकते हैं। परंतु अभी ये कहना, हमारे हिसाब से अभी ये कहना कि फरवरी में रेट कट फॉर श्योर होगा, उसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं। ये सारा जो कुछ है ये डेटा डिपेंडेंट होगा। अभी से लेके फरवरी तक किस तरह इकोनॉमी इवॉल्व होती है, डोमेस्टिक इकोनॉमी कैसे इवॉल्व होती है, ग्लोबल इकोनॉमी कैसे इवॉल्व होती है, US में क्या होता है, बाकी बड़े देशों में क्या होता है, क्या वेस्ट एशिया वाला इश्यू जो है वो एकदम और बड़ा हो जाता है। देखिए रशिया यूक्रेन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, वेस्ट एशिया से उतना ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा, क्या ये और फैलता है? तो उन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। अगर जैसे ही ये लगेगा कि 4% की तरफ RBI अचीव कर लेगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंटेटर ने जब इन्फ्लेशन 4% नीचे आया 2 महीने, क्योंकि वो बेस इफेक्ट इतना स्ट्रांग था कि लास्ट ईयर उन महीनों में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, बहुत सारे लोगों ने रेट कट का बात किया, परंतु रेट कट नहीं हुआ। तो लिक्विडिटी ईजिंग से मार्केट इंटरेस्ट रेट पे फर्क पड़ेगा, परंतु ये कह पाना कि नेक्स्ट रेट कट कब होगा, हमारे हिसाब से अभी थोड़ा मुश्किल है, और ये सारा डेटा पे डिपेंड करेगा, डोमेस्टिक नहीं इवन ग्लोबल डेटा। शुक्रिया, आपने काफ़ी विस्तार से समझाया कि क्या कुछ फैक्टर्स अभी प्ले कर रहे हैं, और साथ ही आपके हिसाब से अभी कहना काफ़ी मुश्किल है कि फरवरी में रेट कट होगा या नहीं। पर हमारे साथ दीपक अग्रवाल भी हैं, कोटक AMC के CIO डेट साइड के। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पॉलिसी से पहले भी हम आपका एक टेक ज़रूर ले रहे थे, तो एक बार ये भी बताइए कि पॉलिसी आपकी उम्मीदों के मुताबिक कितनी खरी उतरी है, साथ ही ये जो CRR का कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट्स का, क्या आपकी उम्मीदों से ज़्यादा है? और साथ ही दीपक जी ये भी समझाइए कि अब फरवरी की जो पॉलिसी है उसको लेकर क्या हरी झंडी मिल चुकी है, या आप समझते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट, एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट का कट आना निश्चित है फरवरी पॉलिसी में? थैंक यू। यस, हमारी उम्मीद थी पॉलिसी में CRR कट होगी, और हमारी उम्मीद 50 बेसिस पॉइंट रेट कट की थी, जो एक्चुअल RBI का डिसीजन आया है। और मैं देवांग से सहमत हूँ कि जहाँ पे हमारा मानना है कि फरवरी से RBI एक 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की शुरुआत कर सकता है। अगर हम फाइनली मॉनेटरी पॉलिसी फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए, और FY26 में RBI ने भी फर्स्ट हाफ FY26 में इन्फ्लेशन को प्रोजेक्ट किया है 4.3% के करीब। हमारा मानना है कि ये साल जो खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन है और वाटर रिजर्व लेवल के कारण राबी क्रॉप प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशन भी अच्छी है, उसके कारण फूड इन्फ्लेशन जो ये साल 4-4.5% के करीब थी, हमारा मानना है कि अगले साल वो 4% के नीचे होगी। तो इंटर FY26 में हमें लगता है कि इन्फ्लेशन जो है वो 4 से 4.10 के करीब रहेगा, और प्लस FY26 फर्स्ट हाफ के लिए RBI ने जो ग्रोथ प्रोजेक्शन 7.1% की रखी है, हमारे हिसाब से प्रोबब्ली वो थोड़ी लोअर हो सकती है, 660-670 के करीब। सो लोअर इन्फ्लेशन RBI को स्पेस ओपन अप करेगा रेट कट करने के लिए। हमारे हिसाब से यहाँ से जून तक RBI के पास एक 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करने की स्पेस है, जिसकी शुरुआत वो फरवरी महीने से कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फरवरी से एक शुरुआत की उम्मीद ज़रूर जता रहे हैं एक रेट कट की, पर हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मनीष गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। RBI गवर्नर का ये भी कहना है मनीष जी कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो ये ज़रूर बता रहे हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी में कि जो भी स्लो डाउन था वो एटलीस्ट Q2 में ही बॉटम होता हुआ दिखा है, और साथ ही अब जो रिकवरी आएगी उस पर नज़र है। आप कितनी सहमति रखते हैं इससे, और आपका क्या टेक है RBI पॉलिसी पे?
देखिए, बिल्कुल सहमति रखता हूं। आप पहले समझ लीजिए, इस पॉलिसी पर सरकार का सीधा सीधा प्रभाव नजर आता है। सरकार की फीलिंग क्या है कि कोई भी लूज हलचल नहीं चाहिए। हलचल नहीं चाहिए इसका मतलब है रेपो रेट में कोई चेंज नहीं करनी है। दूसरी बात है, सरकार को इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस दिखाओ। जो लोग एस्टिमेट कर रहे हैं डाउन होगा, हम उसको सरप्राइज करेंगे, इसलिए उन्होंने चुपचाप CRR 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिए, यानी 1,20,000 करोड़ रुपए फ्री कर दिए आपने बैंकिंग सिस्टम को। देखिए, ये इतना है जैसे हमारी पूरे एक साल की GST, पूरे एक महीने की GST पूरे देश को मिल गई हो। मतलब क्या? और पैसे किसके पास है? बैंकों के पास है। एक नहीं, सारी बैंकों के पास, सब जगह, यानी पूरे देश में एक साथ पैसा पहुंचेगा। नतीजा क्या निकलेगा? लोगों को ज्यादा पैसे अवेलेबल होंगे लोन के लिए, तो ज्यादा कंज्यूमर यूटिलाइजेशन, ज्यादा मनी का सर्कुलेशन, मूवमेंट इधर से उधर होगा। नतीजा सिर्फ ये होगा कि GDP इंप्रूव होगी, जिससे कि सरकार ईयर एंड पर सरप्राइज कर पाएगी, देखो जी हमने आपके अनुमान सारे उल्टे कर दिए, आप लोग कह रहे थे कि इंडिया की GDP ये होगी वो होगी, हमने इंप्रूव कर दिया। तो पहली बात, सरकार उस पेरेंट की तरह काम कर रही है जिस बच्चे के प्री टर्म एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं और वो बताना चाह रहे हैं कि भाई अगली बार पढ़ाई कर लो, मुझे फाइनल टर्म में रिजल्ट अच्छे चाहिए, इसलिए उन्होंने टाइमली रिजल्ट दिए, एफर्ट कर लिए। अगर आप इसको बैलेंसिंग एक्ट कहेंगे तो मैं बैलेंसिंग एक्ट कहेंगे, अगर आपको सरकार का कंसर्न समझना है तो सरकार का कंसर्न समझिए, करेक्टिव एक्शन लेना है तो करेक्टिव एक्शन लीजिए। बट सच्चाई यही है, सरकार ये बताना चाहती है कि मुझे इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है, इसलिए अगर CRR 4% भी रहता है, यानी लिक्विडिटी अगर कम भी हो जाए कोई चलेगा, क्योंकि अब बैंकों की रिकवरी बेटर हो रही है, यानी रिस्क कभी ऐसा नहीं आने वाला है या कम आएगा कि हमारे पास लिक्विडिटी क्रंच हो। यानी सरकार पब्लिक को, शेयर मार्केट को, इन्वेस्टर को वर्ल्ड वाइड ये बताना चाहती है कि हम अब बेटर इकोनॉमी है, यानी हमारे पास 4% के रिजर्व में भी बैंक ऑपरेट कर सकती है, यानी बैंक को ज्यादा ट्रेड करने का मौका मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव साइन है। पीछे छिपे हुए सरकारी कंसर्न अलग है, बट फिलहाल RBI बिल्कुल ठीक चल रही है और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक टाइम है। मार्केट इससे बहुत अच्छा चढ़ना चाहिए। अगर बैंकों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो जाहिर है बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा, तो मार्केट भी अच्छा चलना चाहिए। बैंकिंग के लिए अच्छा टाइम आ गया है। ठीक है, आपकी बात काफ़ी दुरुस्त है और काफ़ी तर्कसंगत भी लगती है मनीष जी। और ये बात भी सही है कि धीरे धीरे करके शायद लोगों को इस बार ब्याज दरों का गिफ्ट ना मिले कम होने का, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस ज़रूर आए। और एक और पॉइंट, बैंक थोड़ा कासा डिपॉजिट से भी जूझ रहे थे। मेरे को लगता है ये जो CRR कट किया है ना, ये भी सरकार ने थोड़ा बैंकों को रिलीफ दिया है कि कासा वासा की चिंता मत करो, वो हम आपके साथ खड़े हुए हैं पीछे। दीपक सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका। देवांग भाई आपका शुक्रिया, विनोद कार्की आपका शुक्रिया आज समय देने के लिए, मनीष गुप्ता जी आपका शुक्रिया, देवेंद्र पंत जी आपका शुक्रिया, और पुनीता मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आज आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में और काफ़ी हद तक इस CRR को डिस्काउंट करता हुआ, आपकी किस्तें शायद अभी थोड़ा कम ना हो क्योंकि रेपो रिवर्स रेपो से कैलकुलेशन होती है, बट कि बैंकों को रिलीफ जरूर आ गया क्योंकि वो CRR से कैलकुलेट होता है। देखते हैं ये बैंक के विजडम के ऊपर है कि आपको कितना रिलीफ देता है या फिर नहीं देता। नमस्कार।